Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the success story session. In front of us today with us, we have Sramana Bhattacharya who has cleared the RBI Grade B in this year, that is in 2022, recently only, and she has become the RBI Grade B officer. And let me tell you that she has a very interesting kind of journey. She was working continuously since 2014, and she is also married. So being a working aspirant, being married, and then also coming and clearing the RBI Grade B and becoming the RBI Grade B officer, you can understand that how big achievement it is. For all the aspirants that have this trouble that I am working, will I be able to clear? I'm married, should I follow this dream? So yes, it is true that you can become the RBI Grade B officer, and ma'am has achieved it. And let's understand from her only that how she was able to come and clear this dream. So first of all, heartiest congratulations to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. And also congratulations to all my fellow mates for clearing RBI Grade B examination. Yes, congratulations to all for clearing the RBI Grade B that were able to clear this year. And it's a big achievement, I can say, for you to clear the RBI Grade B and all the students that are able to clear the RBI Grade B. But listening about your journey that we were talking just before the interview, it's like can you tell about your education background and about the starting of your journey from yourself only? I hope the students will like to hear it. Yes, ma'am. Actually, I have taken science after my 10. In 10 plus 2, I studied science. And after that, I have done graduation in electrical engineering in 2014. And after that only, I joined Infosys. Then in IT industry, I have worked for 5 years. Then I have joined in Indian Bank as a probationary officer. And currently, I am working in Indian Bank as an assistant manager. And from 2017 only, I have started preparation for RBI Grade B. Actually, I have taken this much serious since 2017. But this year, as I'm turning 30 also this year, so this was a do or die situation for me. So this time, I have prepared really hard and exactly. Okay. How did you came upon this RBI? How you knew about the RBI Grade B examination, or how we can say you were motivated, as you told that you were giving only RBI Grade B examination. So how were you Yes, motivated to give only this examination? actually, ma'am, when I started preparation for banking examination, then only I came to know about this RBI Grade B exam. And after doing a bit research about RBI Grade B, like what they do in office and what are the facilities that an RBI Grade B officer is entitled to, and also other aspects, I became interested for RBI Grade B. But yes, I also got to know that it will take me a lot of effort to clear the RBI Grade B officer. But at that time, while working in the IT sector, it was very much of a hectic job. So I did not get enough time to give it to RBI Grade B preparation. But at the same time, I started giving for other banking exams like SBI, IBPS, and all. So in SBI also, I missed for 1.5 marks. Then in 2018, I cleared IBPS PO and joined Indian Bank in 2019. And at the same time only, I appeared each and every year for RBI Grade B, but I could not clear prelims in any of the earlier years, like 17, 18, 19, and 21. These 4 times I could not clear prelims because of the lack of the general awareness information. So in 2020, I got married. So then also after being a working aspirant and then being married. So first 1 or 2 years, it took me to adjust to the uh, household activities and all. So after that, in 2022, like it was, as I earlier told, that it was a do or die situation for me. Like I have to clear it this year. So since last year only, September, October, I gave it a full effort. I can say you are a big inspiration for all the aspirants out there. So we have 22 live right now. So it's a big inspiration. First of all, your determination is so much that you want to clear RBI Grade B anyhow. You were working, of course, it's a tiresome job anywhere you work. Either it is IT work that you were doing or the Indian bank service that you were doing. So it's a very tiresome job. And still you had the determination that you have to clear RBI Grade B. Even after we can say you were not able to clear in the first
3-4 attempts. Still you were like, no, 4 attempts. I can. Yeah, in 4 attempts you were Yes. not able to clear even prelims. Still you had the determination, Yes. no, I want this job and I will do anything for this job. And that's the determination that that's I can say why you are sitting here in front of us and giving this speech and giving this talk, a topper's talk, to inspire so many more females out there, the working aspirants out there. So I'm so happy that I'm taking this interview of you, ma'am. Even I Thank feel you so so much. inspired. My pleasure. Thank you so much for It's my coming. pleasure. Yeah. 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 So now I hope that first of all, any message for the working aspirants out there, for the females out there that are married? हाँ, मैं एक्चुअली एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर अंदर वो मतलब वो डिटर्मिनेशन है या फिर ड्रीम है, तो हो सकता है ये, क्योंकि मेरे घर से मेरा ऑफिस जो है वो 1.5 लाइक 2 आवर, ऑलमोस्ट Hmm. 2 आवर जर्नी फ्रॉम माई होम. सो डेली मतलब 4 घंटे लगते थे मुझे ऑफिस आने जाने में. सो ऑन द वे ओनली लाइक आई यूज्ड टू प्रिपेयर, लाइक जो मोबाइल में जो करंट अफेयर्स है, फिर वीडियोस है जो भी मोबाइल में मैं देखती थी, तो वो वाला एक रहेगा. फिर जो थकान एक रहता है ऑफिस का, वो भी मतलब मुझे लगता था 6-7 महीने से, मतलब मैं इतना भी इतना डिटरमाइंड थी कि मुझे लगता था नहीं, अभी मतलब अभी कुछ रेस्ट नहीं लेना है, बस पढ़ना है, अभी 6-7 महीने बाद आई कैन टेक ऑल रेस्ट, ऐसा. तो फिर मेरे घर में जो लोग हैं बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड, इन लॉज, फिर मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली. तो सब लोग बहुत सपोर्टिव है. फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले मतलब वो लोग मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी उन लोगों को कुछ रिटर्न में गिफ्ट देना चाहिए. तो दिस वाज लाइक आई क्लियर्ड RBI Grade B, and parents are like so happy that after doing all these things, after working, being married also, so they are really happy. So उन लोगों ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस भी किया है, तो इतना. Yes, that is really nice to hear that the families are very supportive, we can say, and you were able to clear this RBI Grade B now. And let's talk about the strategy now, because as a working aspirant, as a married woman, how many hours you can give and how you can come to clear the RBI Grade B exam. I hope that all the students would like to hear it. So we have Saurabh with us, and he's saying that I'm currently at SBI PO. Time schedule is very hectic. Kindly ask ma'am how much hour per day she devoted to studies and how long it took her to complete the syllabus and then revise. So about the hours, can you tell that what was the timetable? एक्चुअली मैं कभी मतलब आवर्स के हिसाब से नहीं गया, मतलब नहीं गई थी. मैं सोचती थी कितना इफेक्टिव हो सकता है. तो Hmm. लाइक जब मैं अक्टूबर नवंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर और दिस ईयर RBI एग्जाम, तो उस टाइम में मैं बस करंट अफेयर्स आने जाने के टाइम देखती थी. तो जो दिन का करंट अफेयर्स है वो मैं देख लेती थी. तो उसमें अगर 4 घंटा मेरा कम्यूट जर्नी है, मतलब जर्नी का टाइम है, तो उसमें से एक्चुअली मैं ट्राई करती थी कि 2 घंटा इफेक्टिव रहने के लिए, मतलब 2 घंटा उससे निकालने के लिए. फिर ऑफिस का जो लंच ब्रेक रहता है, फिर ऑफिस में कुछ भी 10 मिनट्स 15 मिनट्स अगर मुझे कुछ ब्रेक मिल रहा है, तो उस टाइम भी मैं पढ़ती थी. तो मतलब मैं सोचती थी कि और भी 45 मिनट्स मैं ऑफिस में एडजस्ट कर सकूं, तो Hmm. उसमें मैं करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो वाला कंप्लीट कर पाऊंगी. Hmm. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कमिंग टू होम, लाइक इट वाज ऑलरेडी 8 और 8:30. तो उस टाइम में मैं फ्रेश होकर जब मैं पढ़ने बैठती थी, तो इट वाज लाइक ऐसा एक अंदर एक ड्रीम तो था, तो इसलिए मुझे लगता था कि ओके, आई कैन पुट ऑल माय एफर्ट्स. तो इसलिए मैं रात 2 बजे 2:30 बजे तक पढ़ती थी. उसके बाद पता नहीं कैसे, अभी मुझे समझ में नहीं आता है, पर फिर से सुबह मैं 6 बजे उठ जाती थी कि अगर मैं सुबह आधा घंटा भी निकाल सकूं अपने आप के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए. तो ऐसे करके 5-5.5 घंटा तो मैं हर दिन देती थी. और एग्जाम के पहले वो और भी ज्यादा हुआ था. लाइक मैं ऑफिस का मेरा जो कॉलीग्स है, जो डीएम है, वो सब मुझे बहुत हेल्प की थी. तो मैं 7 बजे तक तब घर आ जाती थी. तो उस टाइम में मैं लाइक 6-7 घंटा मैं मतलब निकालती थी कि पढ़ना ही पड़ेगा 6-7 घंटा. So it was like all last 4 to 5 months that I did this 7 hours minimum. I like kept for myself. Okay, so that is really nice. Now I think we can come to the strategy for the phase one. So starting with GA, like you have already told that while commuting, while like your journey, you were revising through the current affairs. But can you tell about the sources of the general awareness? And can you tell a little about general awareness, that how many months of the general awareness you were doing? I have completely done general awareness of 6 months, ma'am. Then also some important questions like the videos you were coming up with just before exam.
So the videos I followed diligently, like your videos and other videos also for current affairs, those were really helpful for me. And एक जो था कि मैं दिन का current affairs दिन में ही देख लेती थी, तो it was like already हो जाता था कुछ कुछ. फिर उसके बाद एक हफ्ता बाद जो संडे मुझे टाइम मिलता था, तो उस टाइम में मैं पूरा रिवीजन करती थी. तो मैं एडुटैप से मेनली करंट अफेयर्स मतलब मैक्सिमम की हूँ. फिर उसके बाद जो ऑनलाइन कुछ कुछ रिसोर्सेस है, तो उससे मैं थोड़ा बहुत, एक्चुअली मैं एडुटैप से वो पढ़ती थी. फिर बाकी सोर्सेस से जो डेली क्विज रहता है, ऐसे आईएएस के प्रिपरेशन के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी जो रहता है, उन लोगों का डेली क्विज रहता है. तो वो डेली क्विज में अटेम्प्ट करती थी ताकि वो थोड़ा ब्रशअप हो जाए. फिर जो वीकली क्विज रहता है आफ्टर 1 वीक, लाइक संडे आई यूज टू सीट एंड लाइक आई यूज टू गिव द वीकली क्विजेस. तो उसमें मेरा थोड़ा प्रिपरेशन हो जाता था. तो मतलब ऐसे करंट अफेयर्स पे किया. पर एडुटैप का जो मतलब जो मंथली करंट अफेयर्स रहता था, वो बहुत अच्छा होता था. अगर मैं कुछ दिन डेली नहीं कर पाई, कुछ हेक्टिक शेड्यूल है या फिर और कुछ रीजन है, तो मंथली वाला करंट अफेयर्स वो मैं बहुत सीरियसली पढ़ती थी. तो वो एक दिन 2 दिन मैं पूरा निकालती थी, फिर मंथली वाले करंट अफेयर्स को रिविजन करती थी. लाइक हर महीना मैं लास्ट मंथ का करंट अफेयर्स रिविजन करती थी. तो उसमें मेरा वो ब्रशअप भी हो जाता था. और एग्जाम के पहले, क्योंकि मैं ये लाइक आई अंडरस्टूड दैट इन माय लास्ट अटेम्प्ट्स, लास्ट ऑल 4 फेल्ड अटेम्प्ट्स, जीए के लिए मैं क्लियर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा क्वांट और रीजनिंग बहुत अच्छा है, उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छा आते थे. पर जीके वाज द ओनली रीजन, मतलब अच्छा नहीं लगता था शायद पढ़ने में, कि इतना मतलब उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसको उसको नहीं कर पाती थी. तो वही मेरा फेलियर का मेन रीजन था. इस टाइम मैंने इसलिए अर्ली स्टार्ट की थी. Okay, so we can say that you focused on one source, one compiled source, and then you were giving quizzes also. So for the practice, for the revision. And how many times of the revision do you think is important for the GA? Because there are too many facts. Yes. Ma'am, 2 to 3 times is okay. Like before 1 month of exam, like I just revised the monthly like bulletin that we were coming up with. EduTap का जो monthly वाला रहता है, जैसे दिसंबर, फिर जैन फरवरी मार्च, जो भी मैं उसका रिवीजन करती हूँ एक महीना पहले. और अब मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ कि 10 days 15 days बिफोर जो आप लोगों का वीडियोस होता है कंटिन्यूस, आरबीआई सर्कुलर रिलेटेड, फिर पीआईबी रिलेटेड, फिर और भी जो करंट अफेयर्स का, जो मंथली वाइज करंट अफेयर्स का, वो सब बहुत अच्छे से, मतलब 4-5 बार करके मैं मतलब वो वाले वीडियो देखती थी, क्योंकि Okay. उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहती थी. जब आप कोई आंसर बोलते थे, तो उसका एक्स्ट्रा कुछ कुछ आप लोग बोलते थे, तो वो वाला मैं 4-5 बार वो वाला वीडियो एग्जाम के 15 days पहले वो बहुत देखी. The marathon sessions, right? मैराथन सेशंस, यस. Okay. So yeah, for the revision, you have to see the videos. For the revision, you have to practice a lot, like through the quizzes and all. So now moving forward, I hope the students are very clear about the GA strategy, that how they can also practice and they can also revise. Now and you have to know about the strengths and weaknesses. Like ma'am has said that GA was her weakness, and that's why she focused more on that. And for the quant, reasoning, and English, ma'am, what did you do? क्वांट एक्चुअली मेरा हमेशा से ही अच्छा था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ. तो इसके लिए फिर जो क्वांट होता है वो एक्चुअली बेसिक थिंग्स होता है. मतलब क्लास 10 के पहले जो लोग क्वांट पढ़ते थे, उस टाइप की, उसके ऊपर ही जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, वो अगर सही है तो प्रॉब्लम नहीं होता है. तो मैं बस प्रैक्टिस करती थी, जो भी मॉक्स है क्वांट और रीजनिंग के लिए, बस वो वाला मॉक्स देती थी. जैसे कि एडुटैप में जो मॉक्स है, मतलब जो प्रीलिम्स के लिए, फिर अदर ऑनलाइन सोर्सेस में भी कुछ कुछ मॉक्स होता है, वो सब मॉक्स देती थी. अलग से कुछ प्रैक्टिस मैंने नहीं किया क्वांटम रीजनिंग के लिए. और इंग्लिश के लिए भी मतलब इंग्लिश के लिए मुझे एक चीज लगा कि अगर ग्रामर सही है, मतलब जो लैंग्वेज पोर्शन है, ग्रामर अगर सही है, तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम द इंग्लिश एग्जाम. मतलब उसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं है, बस इफ योर ग्रामर इज स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन स्कोर मैक्सिमम. तो वो मुझे लगा था. तो इंग्लिश, मैथ्स और क्वांट के लिए, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के लिए अलग से मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं की. मतलब अलग से कोई सोर्सेज यूज नहीं, बस जो ऑनलाइन जो मॉक एग्जाम होता है, बस उसको ही प्रिपेयर किया. Okay, but you still should do like the experiments, even if they are confident about their like quant and reasoning. Still, like ma'am has also done that, give mocks so that you are able to know that what kind of questions can be asked, as well as it's like you are not completely leaving that part. You are practicing a little like through the mocks. So yes, ma'am. Now I think we can move forward with the phase 2, and there is Saurabh that is saying kudos to you, ma'am. A lot of respect for you and your determination. Itishri is also congratulating you, ma'am. Thank you so much.
So now I think we can move forward with the phase 2, starting with the English part. Like for the phase 1, you didn't prepare much for the English, like only mocks were enough. Now coming to phase 2, that carries a lot of marks. So what was your strategy for the phase 2? Actually, phase two में English में, as we all know that there are 100 marks and mainly the paper is descriptive in nature. So you have to write, you have to practice more and more. जैसे कि मैंने किया कि मैं ये पढ़ती थी, दो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एक फिनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स. तो एक हैबिट जब न्यूज़पेपर रीडिंग में फॉर्म हो जाता है, उससे लिखने में बहुत अच्छा मतलब यू विल फील कंफर्टेबल while writing. So उसमें editorials are very important. If we are going through the editorials each and every day, तो वो जो राइटिंग का हैबिट है, फिर सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, वो वाला हैबिट एक अंदर ग्रो हो जाता है. तो वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ने मुझे बहुत हेल्प किया. जैसे और भी कुछ कुछ जो फिनांस और ईएसआई का सोर्सेज, अगर हम लोग का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग है, तो वो अच्छा हो सकता है. जैसे इंग्लिश में इस बार कॉम्प्रिहेंशन आया था, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट के ऊपर आया था. तो I studied derivatives from EduTap only and its videos. So वो वाला जो एक कंसेप्ट था वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हुआ था. तो इसके चलते जो भी उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो डेरिवेटिव्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में होता है कि हम लोग जो उसमें लिखा है उससे डायरेक्ट कॉपी ना करें, ऐसा सजेस्ट करते हैं वो लोग कि अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए. तो अगर अंदर का जो उसका थीम है वो अगर हम लोग को पहले से पता है, तो हम लोग और भी अच्छे से लिख पाएंगे ऑब्वियसली, एंड वी विल नॉट गो बाय द लाइक द लैंग्वेज दे आर गिविंग अस. सो वो न्यूज़पेपर रीडिंग से होता है. और ऑब्वियसली ये सही एफएम का कंसेप्ट तो अच्छा होना ही चाहिए. और जो न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब वो वाला पार्ट मुझे बहुत हेल्प किया रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए. फिर अभी और एक आया था कि वीमेन लाइक द रोल ऑफ वीमेन इन डिजिटल इंडिया, इन्फॉर्मिंग डिजिटल इंडिया. तो ये सब जो क्वेश्चंस है, ये सब पूरा बुकिश क्वेश्चन नहीं है. तो ये सब में अगर हम न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं, डे टू डे न्यूज़पेपर, एंड आल्सो द करंट अफेयर्स वी आर फॉलोइंग, द स्टैटिस्टिक्स द न्यूज़पेपर्स आर प्रोवाइडिंग अस, तो वो सब अगर हम लोग जॉट डाउन करके लिख सकते हैं, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज नॉट टफ, इट्स इजी ओनली, एंड दे आर आल्सो नॉट expecting us to write in some Shakespeare language. So they are also expecting us that in an understandable language. तो वो मैं करती थी. और एक चीज ध्यान में रखना है कि ग्रामर सही होना चाहिए एकदम, और स्पेलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए. लाइक वो स्पेलिंग गलत ना होने से, जब मैं मॉक्स देती थी तो उसका रिव्यू और फीडबैक जब मुझे मिलता था, तो हमेशा ये बोलता था कि ग्रामर ठीक रखो और अपना स्पेलिंग ठीक रखो, और जो वर्ड की लिमिट में लिखना है. तो वो और एक चीज, जब जैसे मुझे अभी भी याद है, जब मैं फर्स्ट और सेकंड मॉक एग्जाम दी थी, तो जो स्टिपुलेटेड वर्ड है उससे बहुत कम वर्ड पे मैं लिखी थी. तो वो लोग मुझे बोले थे, जो एडुकेटर्स लोग मुझे फीडबैक दिए थे, तो वो लोग मुझे बोले थे कि इतना कम वर्ड में लिखने से मतलब उसके लिए भी डिडक्ट होता है मार्क्स. तो वी हैव टू स्टिक टू द वर्ड्स, नॉट टू मच, नॉट टू लेस. सो अगर दे आर आस्किंग अस टू राइट विद इन 600 वर्ड्स, we have to confine ourselves within 590 to 610. If we are writing in 500 words, then they are also going to deduct marks. So वो हम लोगों को facts रहना चाहिए हम लोग के पास. We should be having the facts so that we can write in the descriptive exam. तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का यही स्ट्रेटेजी है कि जो ईएसआई और फिनांस को अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, ताकि हम लोग के पास फैक्ट्स रहे ना लिखने के लिए. और न्यूज़पेपर मतलब वो वाला बहुत अच्छा सेट, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना है. अगर न्यूज़पेपर कोई थॉरोली फॉलो कर रहा है, तो he or she will be having all the facts to write. Okay. Yeah, that is a really great strategy and a comprehensive strategy. We can say that you have to study, like read the editorials, read the newspaper, because that will provide you with the facts. And the knowledge will come from the knowledge of the ESI and FM. Like ESI constitutes everything, we can say, that is going on in the society, like the social issues. So everything will be included in that, and you will be able to write nicely if you read the newspapers, editorials, and everything. So now coming to the now Rukia is asking which newspaper, ma'am, if you can tell. Yeah, I used to follow two newspapers. One is Economic Times, another is Financial Express. And also, I heard from my fellow mates that they used to follow Mint or Business Standard. They are also good, but obviously, you should not shuffle too much. You should stick to one or two newspapers daily, because अगर कोई न्यूज़पेपर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका भी एक फॉर्मेट होता है कि इसके बाद एडिटोरियल रहता है, इसके बाद नेशनल न्यूज रहता है, इसके बाद फिनांस.
तो वो वाला फॉर्मेट भी ना पढ़ते पढ़ते 10 डेज 15 डेज आफ्टर रीडिंग, तो वो अंदर एक ये हो जाता है कि अभी मैं ये वाला पढ़ूंगी। तो डोंट डू टू मच शफलिंग बिटवीन न्यूज़पेपर्स, जस्ट चूज टू न्यूज़पेपर्स एंड स्टिक टू द न्यूज़पेपर्स। लाइक जो सोर्सेस है उसको भी कॉन्फाइंड रखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग बार बार ढूंढते रहे सोर्सेस को। True. The sources should be confined and a single source should be followed, or additional source should be followed. So now coming to the ESI part, how were you able to prepare for the ESI part? एक्चुअली मैम ईएसआई में जो इकोनॉमिक्स पार्ट है वो मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, जो मेरे लास्ट अटेम्प्ट है, मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर की थी, पर रमेश सिंह का जो इकोनॉमिक्स का बुक है तो उससे मैं बहुत पढ़ती थी। फिर जो 9, 10, 11, 12 जो एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स बुक रहता है तो वो सब मैं थोड़ा पढ़ी थी, वो अर्लियर अटेम्प्ट्स में, नॉट इन दिस अटेम्प्ट। इन अर्लियर 4 अटेम्प्ट्स आई हैव स्टडीड दोस इकोनॉमिक्स थिंग्स। एंड बट सोशल इश्यूज के लिए मुझे बहुत टेंशन होता था, क्योंकि उसमें बहुत फैक्ट्स याद रखना पड़ता है। मतलब सोशल इश्यूज में ऐसा नहीं कि एक बार में आई हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन आई कैन राइट। यू हैव टू लाइक मेमोराइज द फैक्ट्स। लाइक इसका जो अगर मैं एग्जांपल से दे सकूं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसमें क्या हुआ, इसमें किसका कैसा स्टैंड है, तो ऐसा ये सब फैक्ट्स याद रखना है। तो जैसे कि मैं पहले बताई, मेरा जनरल अवेयरनेस थोड़ा वीक था, तो इसीलिए मुझे सोशल इश्यूज के लेके उसको लेके थोड़ा टेंशन था। तो उसके लिए मैं मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो वाला पार्ट में मैं ज्यादा ध्यान दी थी। और एग्जाम के पहले जैसे आफ्टर द प्रीलिम्स आई स्टार्टेड रीडिंग द सोशल इश्यूज पार्ट seriously, but because economics I already completed before exam only, yeah, before the prelims exam, but for social issues I started preparation after prelims। and इसमें भी मैं बोल सकती हूँ कि इकोनॉमिक साइंस और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज ने मुझे बहुत हेल्प किया। सोशल इश्यूज में उसमें जो एडिटोरियल रहता है उससे आंसर लिखने में काफी आसानी होती है। तो यही बोल सकती And how many months of the current affairs you prepared for the ESI? 6 months, मैम, 6 months current affairs and the schemes like EduTap में जो समरी स्कीम्स रहता है, मतलब जो ऑल टोटल मिलके जो स्कीम्स रहता है 330 पेजेस ऐसा कुछ था हम लोगों के लिए लास्ट ईयर। तो वो वाला मैं अच्छे से पढ़ी थी, वो वाला स्कीम्स अच्छे से पढ़ी थी। पर फिर भी दिस टाइम ईएसआई जो आया था वो बहुत टफ आया था। मैं पढ़ी थी पर ईएसआई ऑब्जेक्टिव वाज नॉट गुड। लाइक I discussed with other aspirants also, like who have also cleared, but ये सही ऑब्जेक्टिव में आप जब तक मार्क्स ना आए यू विल नॉट गेट टू नो दैट उसमें क्या हुआ है। पर ये से डिस्क्रिप्टिव वाज गुड। एक्चुअली मैं ये बोलूंगी कि बहुत लोग सोचते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखेंगे, पर ये पहले मुझे भी लगता था, बट वंस आई अपीयर्ड इन दिस एग्जाम इन द मेंस, तो आई गॉट टू नो दैट डिस्क्रिप्टिव पोर्शन इज इजियर देन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली। ऑब्जेक्टिव में अगर डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ तो लिख सकते हो, मतलब इफ यू नो द फैक्ट्स एंड इफ यू हैव द कंसेप्ट तो कुछ लिख सकते हैं उसमें। अगर ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव इज इजियर आई मस्ट से। पर एग्जाम के पहले मुझे भी लगता था कि इसका पैटर्न चेंज हो गया तो डिस्क्रिप्टिव में शायद उतना अच्छा लिख नहीं पाऊंगी, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम एन यूपीएससी बैकग्राउंड। अगर यूपीएससी बैकग्राउंड है तो लिखने का एक हैबिट रहता है और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता था। पर मैं बोलूंगी कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज इजियर। और एक चीज की डिस्क्रिप्टिव के लिए एक के बाद एक देना है मार्क्स। मतलब जितना भी ऑनलाइन सोर्सेस है, अगर मैं EduTap का देखूँ तो 10 मार्क्स तो रहता है, तो उसका डिस्क्रिप्टिव देते देते इवन फॉर्म एंड हैबिट इनसाइड योरसेल्फ, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। So yes, there was a question about the source and for the descriptive, and you have already explained that very nicely. That you, when you are reading the newspapers, when you are reading the current affairs, you are very much habitual with the facts. You know the facts. You just have to write it down, and it becomes easier in the descriptive because you have something in your mind to write at least, and then you have to practice it a lot. You have to give the mock test so that you become habitual with that habit of writing, of typing. And did you practice everything on computer or on pen and paper? Yes, ma'am, on computer. Actually, the thing is, when I started my preparation for ESI and AFM, then I used to make notes, like while watching the videos of the sources and while reading from books, I used to make notes of myself. So while doing the revision, like I used to go through the notes only. So वो वाला मुझे बहुत हेल्प किया। ये नोट्स फॉर्मिंग का हैबिट मेरा, मतलब सिंस चाइल्डहुड आई हैव दिस हैबिट, तो उसमें मुझे आसानी होती है तो फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए। पर जब मैं एग्जाम देती थी वो ऑनलाइन जैसे होता है कीबोर्ड में टाइपिंग, क्योंकि उसका भी स्पीड एक मेंटेन होना चाहिए। पर जो कीबोर्ड होता है वो भी एग्जाम में हमेशा अच्छा नहीं होता है, पर लकीली आई
I got a good keyboard. So मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो कीबोर्ड अच्छा नहीं आता है बहुत लोगों का, पर I got a good keyboard for God's sake. So उसमें मुझे थोड़ा हेल्प मिला ही था, और जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर लिखना है, we have 1.5 hours for descriptive part. तो उसके अंदर लिखने की कोशिश करती थी। जैसे मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगी जो भी एक्सपीरियंस है कि मॉक एग्जाम इज मस्ट, मतलब उसको देना ही होगा। इफ यू ऑल्सो डोंट नो द आंसर, लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, like before the mains exam I have taken 10 days of leave. So उस टाइम में मैं क्या करती थी, हमेशा every question like we don't know each the answer of each and every question. तो वो मैं क्या करती थी, जो सुबह में उसका जो आंसर पेपर है, आंसर कॉपी जो मतलब मॉक का, वो मैं देख लेती थी कभी कभी, क्योंकि हमेशा we don't have that much time कि we will complete the whole syllabus and then we will only start writing the mock exams. तो मैं आंसर देख लेती थी, तो एक दिन बाद वो वाला मॉक एग्जाम जो है तो वो वाला मैं अपियर करती थी। तो इसमें क्या होता था कि वर्ड का जो लिमिट है, मेरे पास ऑलरेडी फैक्ट्स है, आई नो द आंसर, बस मुझे टाइपिंग स्पीड और वर्ड लिमिट जो है वो मैं मतलब मेंटेन कर सकती थी। ये मुझे लास्ट ईयर का मतलब एक बंदा था, वो हमारे बैंक से ही थी, तो उसने भी आरबीआई क्लियर किया था, वो मुझे ये सब टिप्स बहुत दिया था। तो ही इज वर्किंग इन आरबीआई करेंटली, तो ही हैज गिवन मी ऑल दिस टिप्स दैट इफ यू डोंट नो द आंसर, जस्ट go through the mock answers a day prior to taking the mock exam. So ऐसा जैसे एक्सपीरियंस को लगता है कि मुझे सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं मॉक एग्जाम में अपियर करूंगी, पर दिस विल बी अ मिस्टेक, दिस डोंट डू दिस मिस्टेक। लाइक अगर तुम्हें आंसर नहीं पता है तो वो पहले से मतलब थोड़ा उस क्वेश्चन को पढ़ाई करके बट मॉक एग्जाम देना ही है, मतलब दैट्स अ मैनेजर। True, that's so true. Now coming to the finance and management part. So you have explained really nicely about the objective that current affairs you have to do of 6 months. Then you have told about the descriptive also, that the practice and the mock test are the must that you have to do, as well as you have told a very unique strategy that just see the answer and then see your typing speed, how the words you are forming, like what language you are forming and everything. So now I think we can come to the finance and management part. Can you tell about the source of the finance and management? Yes, ma'am. For finance and management, I totally relied on EduTap sources. Like EduTap finance and management videos are really good. Anjit sir videos. I especially like I want to thank Anjit sir. I am really grateful. Those videos are very much crisp videos, like 10 to 15 minutes, or if lengthy, then also 20 to 25 minutes maximum. So like आने जाने, जैसे मैं पहले बता रही थी कि आने जाने के टाइम में, कम्यूटिंग के टाइम में मैं पढ़ती थी, तो वो सब वीडियोस में आने जाने के टाइम में, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस है 15 मिनट्स 20 मिनट्स का, तो वो बहुत इजी हो जाता था मुझे एक वीडियो कंप्लीट करने में, अगर लाइक वाइल कम्यूटिंग। तो वो वाला वीडियोस बहुत अच्छा है। फिर फिनेंस एंड मैनेजमेंट का जो नोट्स है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे पहले अर्लियर लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इंग्लिश में एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन में एक डेरिवेटिव का पोर्शन आया था, तो वो जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट अभी भी मुझे याद है, वंशित सर का वीडियोस इतना अच्छा था डेरिवेटिव में, तो वो वाला मैं बहुत पढ़ी थी। फिर उसका जो समरी शीट्स है, चैप्टर मैं बोलूंगी स्पेशली, समरी शीट्स आर रियली गुड। लाइक प्लीज गो थ्रू द समरी शीट्स, लाइक दे आर रियली गुड। तो वो समरी शीट से तो उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होता था। तो बॉन्ड, डेरिवेटिव, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑल थिंग्स जो फाइनेंस मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, फिर जो भी मैनेजमेंट में है, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोगों को लगता है कि मतलब उसमें ज्यादा सिलेबस नहीं है, और मैनेजमेंट इज रियली वास्ट। मतलब अगर उसको कोई बुक से पढ़ेंगे तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आई नेवर स्टडीड मैनेजमेंट फ्रॉम अ बुक, आई ओनली रिलाइड ऑन द एडिटर सोर्सेज फॉर मैनेजमेंट। So those are also really nice. Like help me. Like I want to point one question. Like there is one question, barriers of communication, that came in finance and management paper this year only, descriptive. तो हम लोग को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, कि हम सबको पता है, वी ऑल नो व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट उसको एक अच्छी तरह से लिखना है और उसका जो पॉइंट्स है वो भी अच्छी तरह से मेंशन करना है। तो वो मैं बोलूंगी स्पेशली कि आप लोगों का जो भी वीडियोस है फिनेंस एंड मैनेजमेंट का, वो मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। अगर उससे कोई पढ़ रहा है तो they don't need to rely on external sources, Okay, thank especially you for so much. finance and management. Yeah, thank you so much, ma'am. And I will convey this message to Anchish sir. He will be very happy to hear this also. So now coming like finance and management, you have said that one source was EduTap, like the only source that you followed was EduTap, and that helped you in Yes, the descriptive part also. Now coming to again the practice, did you practice a lot for the finance and management descriptive part? yes, ma'am. For finance and management also, I practice in the similar way I did in ESI.
But finance and management, I will say that finance and management is easier than ESL because उसमें ऐसे मतलब जो भी क्वेश्चंस आता है वो एक्चुअली जो सिलेबस है उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आता है, उतना कुछ ज्यादा बाहर से एक्सटर्नल से नहीं आता है। जैसे इस बार आया था एनबीएफसी का क्वेश्चन आया था, तो ये सब बहुत कॉमन चीज है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सप्रेस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो भी जो आया था, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ये सब अगर हम लोग वो सिलेबस को अच्छे से फॉलो कर रहा है तो वो अच्छा है। जैसे मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, जो भी सिलेबस में लिखा है बस वो वाला एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। मतलब सिलेबस में जो जो पॉइंट्स मेंशन है वो वाला मिस नहीं होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप जो भी सोर्स ले रहे हैं वो वाला सिलेबस को डिलीजेंटली फॉलो कीजिए। मतलब वो वाला सिलेबस अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हम लोग कोई भी रिसोर्स ऑनलाइन सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, बट वो सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस ओनली। सिलेबस के बाहर फिनेंस एंड मैनेजमेंट में दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग। लाइक आई हैव आल्सो सीन द अर्लियर एग्जाम, अर्लियर मेंस एग्जाम, syllabus के बाहर वो लोग they are not asking anything. Okay. Yeah. So now Rukia is asking, ma'am, did you took phase 2 mocks prior to phase 1 or after phase 1 only? The No, mocks. after phase 1. Okay. After phase 1. So yes, when you are preparing for the phase 2, then you can take the mocks for the phase 2. So now coming to, like, we have also talked about the finance and management. Now I think we have done for the phase 2 also, and I hope that the aspirants must have learned a lot from ma'am also, that how you can prepare for the descriptive and objective of the phase 2. Now we can move forward with the interview part. So how was the interview, ma'am? Interview, like I did not prepare much about, like, for the interview earlier, but after the mains exam results only, like I was waiting for the mains exam results. So once it came out, so I started preparation for interview part. But interview के लिए I only followed newspaper as I earlier told, the two newspaper, and I will suggest all the aspirants just go through the hard copy of the newspapers. Like it will really help you. Hard copy of the newspapers, you will get the flavor for the news also, and it will be easy for you. Like if you are a working aspirant while commuting through train or bus, you can carry the newspaper and you can just read the newspaper. And एक चीज जो मैं करती थी जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, while I was like going through the newspapers, एक पेन लेके मैं रखती थी और न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट फिनेंस रिलेटेड न्यूज है या फिर ईएसआई रिलेटेड जो भी है और आरबीआई रिलेटेड स्पेशली एडिटोरियल्स जो आते हैं वो सब, तो वो सब मैं टिक मार्क करके रखती थी, उसको मार्क करके रखती थी। तो घर आने के बाद जो मेरा मम्मी करती थी उसको कट करके, वो पेपर को कट करके एक एक मेरा कॉपी था तो उसमें वो चिपका देती थी। तो उसमें मैं क्या करती थी, जब इंटरव्यू के एक हफ्ता पहले जस्ट आई वेंट थ्रू ऑल द न्यूज। लाइक मुझे लगा था कि लाइक आरबीआई में जब इंटरव्यू में जाएंगे जो जो लाइक जो पहले ईयर का एक्सपीरियंस है वो लोग मुझे यही सजेस्ट किए थे कि न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, तो उसको मैं डिलीजेंटली फॉलो की थी। तो जब मम्मी ने पूरा बनाया था बस 2 महीने का है, तो वो इतना मोटा हो गया था एक कॉपी, तो उसको मैं इंटरव्यू के एक हफ्ता पहले बस उसको रिविजन करती थी, जो भी की पॉइंट्स है ये सब करने के लिए। और एक चीज मैं करती थी, आरबीआई का जो वेबसाइट है, मतलब वो वाला मैं बहुत अच्छे से की थी, अबाउट अस से लेके जो भी डिपार्टमेंट्स है, फिर वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मतलब दैट्स अ रियली गुड डॉक्यूमेंट। मतलब इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर आरबीआई शुड गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, देयर मतलब एवरीथिंग मेंशन्ड है उसमें कि आरबीआई का क्या फंक्शन है, क्या वर्किंग है, क्या कल्चर है, सब कुछ। तो वो वाला मैं बहुत अच्छे से पढ़ी थी। फिर बाकी जो जो मस्टर्ड सर्कुलर है, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ बैंकिंग बैकग्राउंड, तो सारा सर्कुलर मुझे अच्छे से पढ़ना था। तो सर्कुलर मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मास्टर सर्कुलर जो भी, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, जैसे जो केसीसी का, एसएजी का, फिर होम लोन वगैरह, मतलब जितना भी होता है, क्योंकि मैं बैंकिंग एक्सपीरियंस हूँ। फिर सुपरविजन रेगुलेशन का आरबीआई का, ये वाला मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छे से कोई आरबीआई का सर्कुलर पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन आया था। इफ यू आर अ बैंकिंग, लाइक इफ यू आर हैविंग अ बैंकिंग बैकग्राउंड, देन दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। तो ये सब मैं अच्छे से पढ़ी थी। फिर आरबीआई का जो इनोवेशन हब है, लाइक आरबीआई का वेबसाइट में बहुत अच्छे से रख लिया था, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो मैं डिलीजेंटली फॉलो करती थी, एक कॉपी बनाई थी मैं उसके लिए, उसका नोट डाउन करती थी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इंटरव्यू के लिए इतना प्रिपरेशन था, बस आरबीआई का वेबसाइट और न्यूज, और तो ये मुझे बहुत अच्छा गया था। फिर मैं मॉक इंटरव्यूज देती थी, और जो भी क्वेश्चन आता था, मतलब लास्ट ईयर का जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको एक कॉपी में लिखती थी, उसका आंसर्स देती थी।
आंसर्स नोट डाउन करती थी। फिर हर दिन जैसे मुझे 4-5 दिन बाद मुझे याद है, मैं मॉक इंटरव्यू में अपने आप में ही प्रैक्टिस करती थी। तो मेरा कभी मेरे मम्मी भी लेती थी मॉक इंटरव्यू बैठ के, तो वो आसान होता था। मतलब जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो आ जाता था, डर नहीं रहता था एक। तो ऐसे ही इंटरव्यू का प्रिपरेशन था। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी टिल इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू 30th August था, एंड द मेंस रिजल्ट केम आउट इन इन द मिड ऑफ जुलाई। आई कुड नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, but in the mid of July. So I got 1.5 months. So ये सभी किया मैंने चलो। And how was the real interview? Like about the रियल panel इंटरव्यू, members? या एक्चुअली कोलकाता में था मेरा इंटरव्यू, तो 5 members वर देयर इन द पैनल। चेयरमैन सर जब मैं गई थी तो वो लाइक he behaved so nicely with me. तो उसने मुझे मेरे आईटी बैकग्राउंड से पूछा था। हाँ, और एक चीज आई वांट टू से, लाइक जो लोग आईटी से आ रहा है उन लोगों को ये वाला क्वेश्चन एक याद करके रखना मैं बोलना चाहती हूँ कि आईटी का बैकग्राउंड मतलब इसमें आरबीआई में कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई में आईटी का है, जैसे आईटी आईटी का बहुत कुछ है। तो they can ask you this question. Like I was working as a data analyst in while working in Infosys. तो तो वो वाला पोर्शन से अभी डेटा एनालिसिस जो है वो इतना एप्लीकेशन उसका बहुत ज्यादा है। मतलब चारों तरफ बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है डेटा एनालिसिस का। तो वो आरबीआई में भी है। तो जस्ट डू अ बिट ऑफ रिसर्च, जस्ट गो थ्रू अ फ्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब, लाइक हाउ डेटा एनालिसिस कैन हेल्प यू इन बैंकिंग सेक्टर और फिनेंस सेक्टर, सो दैट यू कैन आंसर प्रॉपरली। तो ये वाला मुझे चेयरमैन सर ने पूछा थे कि आईटी बैकग्राउंड तुम्हारा कैसे हेल्प कर सकता है। फिर फिर मुझे जो रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा था वो वाला चीज भी एक सर पूछे थे कि आरबीआई शुड बी ओरीज अबाउट दिस रुपी डेप्रिसिएशन एंड आरबीआई शुड नॉट बी ओरीज अबाउट दिस रुपी डेप्रिसिएशन। सो 2 points in favor of that and 2 points against this. So ये वाला क्वेश्चन as I was going through newspapers daily, so it was easy for me to answer this type of question. एंड ऑल्सो और एक चीज मुझे पूछा था जो आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इससे भी मुझे पूछा था क्वेश्चन। और एक मैम मुझे सुपरविजन के ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछा था। जैसे मैं पहले ऑलरेडी बताई कि बैंकिंग में इफ यू आर इन बैंकिंग तो सुपरविजन और रेगुलेशन वाला चीज बहुत अच्छे से पढ़ते जाना है, क्योंकि आरबीआई हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन बैंकिंग रेगुलेशन और सुपरविजन। तो वो बड़ा अच्छे से पढ़ना है। फिर मेरा इंटरव्यू एक्चुअली 10 minutes में हो गया था। तो आई वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड दैट इतना शॉर्ट में मेरा इंटरव्यू हो गया। मेरे जस्ट पहले और एक फीमेल कैंडिडेट थी, उसका 35 minutes चला था इंटरव्यू। तो आई वॉज थिंकिंग दैट इनका इतना हुआ है तो मेरा 10 minutes हुआ है तो शायद आई वोंट बी एबल टू क्लियर। बट अभी मुझे ये, पर तब मुझे मैं मॉक इंटरव्यू में जो भी एडुकेटर्स थे, मॉडरेटर्स थे, उसको मैं पूछती थी कि मेरा इतना शॉर्ट है इंटरव्यू, मतलब उन लोगों को मैं पर्सनली मैसेज करके पूछती थी कि इतना शॉर्ट हुआ इंटरव्यू तो लाइक आई एम नॉट मच होपफुल अबाउट द इंटरव्यू। पर उन लोगों ने बोला था कि उधर इतना एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं तो दे आर हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन आवर एज, लाइक 30 years 32 years someone is having experience. So उन लोगों को 5 minutes में पता चल जाता है। पर उस टाइम में आई वॉज नॉट बिलीविंग दिस फैक्ट, बट नाउ as I am in this situation, so I can believe that fact obviously. 10 minutes हो या 8 minutes हो, जो भी हो, उसमें उसको लेके कोई टेंशन नहीं लेना है। उन लोगों को जो समझना है वो लोग 5-6 मिनट में शायद समझ जाते हैं। जैसे और एक मेरा हम लोगों का बैच का और एक है जो जिससे क्लियर किया। he told that he was having an interview of 7 minutes, so he was not also hopeful about his interview, but he also cleared. तो ये वाला टेंशन अंदर नहीं रखने का कि अगर अगर इंटरव्यू शॉर्ट है तो शायद हम लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यू हैज अ मेजर रोल टू प्ले, इट इज कैरिंग 75 marks। तो अभी मार्क्स आने के बाद पता चलेगा कि कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पर ऑब्वियसली शायद इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स भी मिला है होगा। Yes, ma'am. And thank you so much for telling everything about this. And now there is a question that has come from Shubham, that if he's a new aspirant and if he wants to start the preparation, then for a new aspirant how he should move forward. So anything about that? Yeah, actually for new aspirants I will say that GK is very important, like the general awareness part. Start with the general awareness from now only. Otherwise, you will not be able to memorize all the facts just before the exam. Start from now only. And if you are having a good sense about this quantum reasoning, then you can just go through the mocks and you can give the mocks.
So after mocks, like after appearing in a mock, like what you have to do, you must analyze the mock and you must answer all the questions like the from the answer paper or by your own. Like एग्जाम के बाद उसको जो भी क्वेश्चन हम लोग मॉक में अटेंड नहीं कर पाए उसको अच्छे से फॉलो करना है और उसी टाइम पे करना है लाइक इफ इट कीप इट फॉर अदर टाइम देन इट विल नेवर हैपन तो उसको उसी टाइम पे एनालाइज करना है ताकि हम लोग मतलब एक मॉक अगर कंप्लीट करना है तो उसको होलसम कंप्लीट करना चाहिए ये बोलूंगी और अगर इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड बैकग्राउंड इन quant or reasoning, then go through YouTube videos. There are ample of videos in YouTube for short tricks in quant and reasoning. Just go through the videos and attempt. Okay. And if someone is not from the finance and management background and economics background, so what should be their strategy? Like, should they prepare for the finance and management and economics if they have time, or should they just start with the phase one and then later on prepare for phase two? No, I will suggest that I'm not from a finance background. I am from BTech background, and also I worked in IT, so I don't have a finance background. So what I did that I earlier told that I have appeared for RBI exams since 2017. तो उस टाइम में मैं जीके को लेके उतना सीरियस नहीं होती थी पर हाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी थोड़ा जो रमेश सिंह का बुक मैंने बताया वो अगर कोई पढ़ना चाहते हैं लाइक शायद एग्जाम के पहले वो सब नहीं हो सकता है एग्जाम के पहले यू नीड अ रिसोर्स लाइक concrete resource from where you can just get the syllabus and you can just read out. तो वो मैं बोलूंगी कि if you have time like if you are aspiring for 2024 or something like that तो रमेश सिंह का वो वाला बुक पढ़ सकते हैं वो बहुत अच्छा है तो उससे क्या होगा यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस सब्जेक्ट लाइक वो भी होना जरूरी है मुझे लगता है कि इफ यू आर गोइंग टू एन फाइनेंशियल organization or institution just mugging up the sources will not help you but you should know something like exam के पहले एक महीना पहले source mug up कर लिए it's not the case but you should know about the like economics concept and finance concept and for finance also I would suggest another book Bharti Pathak ka there is one book for finance so you can go through that book that is really good it is a lengthy book but the concept you will build is really nice. Okay, so if you have time, you should go with the first you understanding the subject that what are the subjects, and then you can continue with the preparation because after phase one also you only get 40 days, 40 days for the phase two, I can say. So you do not have much time to cover the finance, cover the management, cover the economics part. So now there are so many questions that are coming. Ma'am, did you that is covered? Okay, so I think we can cover up now. We can end this session, but before that, any message that you want to give to the aspirants out there for all the phases for preparation of the RBI Grade B? I want to tell that never lose your hope. If you are married, if you are working candidates, never lose your hope. If you have the determination, then you will obviously do it. Like मैं एक example देना चाहती हूँ. हम लोगों के बैच में just before few days I came to know about that girl. She is 8 months pregnant and she has cracked the job, the RBI Grade B. Like and kudos to her. Like we all are telling that we have done like before knowing this news. I was thinking that okay, so everyone is congratulating me. I am married. I have done a good job like that. But after knowing this news that she is 8 months pregnant and while preparing, while preparing and while going through this journey, she was carrying a baby, and with that she has covered so much of syllabus. She has given the exams, prelims, mains, and interviews. Like, if she can do, then we think that we all can do. Yeah. Last question, ma'am. The Sidesh is asking ki, the questions are asked from the academic background also, like you had the BTech background. So were the questions from that also? No. For me, there was no question for like from BTech. There was no question. Okay, but because they can. I had a long working experience, almost 8 years. So there were a lot of things to ask. I think that's why they did not ask anything from this. Okay, so they asked the questions from the IT background, like the job that that you were doing, as well as they asked regarding the supervision regarding the bank job that you were doing. So they can ask about the academic background,
but you had a long working experience, so they asked more questions on that. So thank you very much, and it was such a great message. And a question was coming regarding the kid, that I have a kid and I want to prepare for the exam, but I think you have already answered that question, that there was a lady that was able to clear the exam being pregnant also. So we can understand that yes, if you have that determination in yourself to clear the exam, to go through that journey, so hard work is needed, the determination is needed. Thank you so much, ma'am, for coming and inspiring so many people. Now we have 68 lives, so you can understand that how much inspiration you are giving. It's And my pleasure. yeah, Thank you it's so even much, ma'am. Yeah. it's even my pleasure to take your interview. So thank you very much, ma'am, for coming. Thank you so much, ma'am. Thank you so Thank much, you so ma'am. much. Sunday, I want to say all the best to all the future aspirants. Thank you so much, ma'am. Just a second.